We are now live, sir. Please go ahead. Good afternoon, namaskar, and welcome every one of you to another edition of our webinars in the series Illness to Wellness. As you all have been following us and have been patronizing our seminars in these webinars in the past few years, all of you know that we've been organizing these webinars since the onset, or rather the onslaught of COVID and the times of lockdown. We've been disseminating information, knowledge about different aspects of disease and health. We've been associated with a few of the top most specialists in healthcare in different fields of medicine, uh, all the fields of medicine which concern you directly. We've been getting their opinion, they've been answering our questions. And in the same series today, we are bringing up the topic of kidney care. Kidney care, preventive and curative actions. This is to once again underline the importance of kidney on the World Kidney Day. We have today with us uh, one of the few of the most renowned specialists in India from the field of nephrology, and we are having a diverse panel of specialists today. We have Dr. Siddharth Lakhani. He is a consultant nephrologist and transplant physician at Lakhani Kidney Clinic, Fortis Rahija Hospital, Global Hospital, Somaiya Hospital, Kohinoor Hospital, SRV Hospital, Zainova Shalby Group of Hospitals from Mumbai. So welcome, Dr. Siddharth, and thank you so much for sparing time and being with us. We also have with us Dr. Rishit K. Harbara. He is a consultant nephrologist at BSCS MG Hospital, Andheri, at SRV Hospital, Goregaon, and associate consultant Sir H.N. Reliance Foundation Hospital, Mumbai. So welcome, Dr. Rishit, and thank you so much for sparing time and joining us here. We also have with us Dr. Manju Agrawal. She is the Chief Medical Services and Chairperson Nephrology, Artemis Hospitals, Gurgaon, NCR, Delhi. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am, so much for sparing your time and joining us today. So, we all understand the important role that the kidneys play. We are all worried about them. But just to start the ball rolling, and here I would first of all like to give my gratitude to ASSOCHAM, especially Shri Anil Rajputji, who's the chairman of the CSR Council of ASSOCHAM. Unfortunately, he couldn't be here today because of certain urgent meetings. Otherwise, he would have personally welcomed all of you, our esteemed audience and our esteemed panelists. So we are very thankful to ASSOCHAM for organizing this series of webinars, which have been going on since past 2 years. So thank you, ASSOCHAM, and thank you, Shri Anil Rajputji. Now let's start our webinar. Dr. Siddharth, I'd like to come to you, and this is a very simple question, rather it's my request that you please explain to our audience, what do the kidneys actually do? Why are they so important? Why are we gathered here today? Thank you, Dr. Rajesh. So it's a very important question that probably as a general population, we realize kidneys are basically these bean-shaped organs located probably somewhere at the back or probably at the end of rib cage. And they are somewhere placed at around 10 to 12 centimeters. They do a lot of work in the body. So because probably we don't have some evaluations done in past, we don't know. Kidneys have a major role in blood pressure control. So if you have blood pressure, chances that you may have some sort of kidney disease is very high. Kidney does an important part in managing your calcium, phosphorus, and probably vitamin D metabolism. So your bone strength also is taken care by kidneys. You have volume control or the sensors of body which will manage your sodium and water levels. That is again at a brain level and at kidney level. So it's like if you drink more water, you will go to more urination. That's how the kidney manages your body volumes. It's like if you're in a heat and if you're taking less water, your urine excretion or volume will go down. Kidney has multiple other functions, hormonal functions, which are there. Kidney secretes a lot of hormone. So that probably takes care in managing your
hemoglobin. So erythropoietin is one of them, which probably that's why all patients of kidney disease will have low hemoglobin. And of course, metabolism of uric acid and all solutes. Solutes means जो भी शरीर का कचरा है, जैसे कि यूरिया, uric acid, BUN, and creatinine. So this is all again probably excreted by kidneys. And kidneys is connected to all organs of the body. So if you have at the end of the day, if you say that you got heart problem, you're going to have kidney problem. You have infection in the body, your blood pressure drops down, you're going to have kidney issues. If you have any source of infection in the body, again your creatinine is going to go high. If you have malaria, severe malaria, you can have kidney issues. So kidney becomes an integral part of all patients who are admitted in ICU. So it's important, and with probably the way diabetes and blood pressure is going at its peak, diabetes and blood pressure and stone, these are all three probably directly or indirectly starts affecting the kidneys. And because kidney disease don't present early and the symptoms are not so common, we don't realize and we don't test them. And probably whenever you get them tested or whenever you have symptoms, it's too late. Over to you, Dr. Rajesh. Thank you so much. Thank you so much. डॉक्टर सिद्धार्थ, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि किडनी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है हमारे शरीर में। कोई भी शरीर का ऐसा हिस्सा नहीं है जो किडनी से एसोसिएटेड ना हो। किडनीज वॉल्यूम कंट्रोल करती हैं, क्योंकि हमारा शरीर ज़्यादातर तो पानी होता है। कितना पानी शरीर के अंदर रहे, वो ज़्यादा हो जाए तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और खून जो हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में बनता है, उसको बनाने में किडनी का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। आगे जाके हम और चर्चा करेंगे। वी विल डिस्कस मोर इन डिटेल about these different aspects, but thank you. We need to understand why kidneys are very important to us, and this is what you just told us. Thank you so much. So, Dr. Rishit, please tell us, I mean, how can someone suspect kidney disease? I understand from what Dr. Siddharth was telling that kidneys as such may not give any symptoms. So how can we suspect a kidney disease? Right. So around in lot of cases, till 80% of the kidneys are damaged, you may not experience any symptoms. But there are certain diseases which can give you certain symptoms, like you can have swelling of feet, like पैर में सूजन, face में सूजन. There may be some urinary abnormalities, like patients may feel that they are passing less urine. यूरिन कम हो रहा है, या रात को ज्यादा बार उठना पड़ रहा है यूरिन करने के लिए, या अपीयरेंस ऑफ यूरिन में भी डिफरेंट, लाइक कभी कभी पेशेंट्स में एक्सपीरियंस ब्लड इन द यूरिन, लाइक ब्लड हो सकता है यूरिन में, या देयर में भी फ्रॉथ इन द यूरिन, लाइक ज्यादा फेस हो सकता है यूरिन के अंदर. इसके अलावा पेशेंट्स में है दे मे नॉट प्रेजेंट विद एनीथिंग एल्स एंड दे मे ओनली हैव हाई ब्लड प्रेशर and they may have headache. Sometimes it may present with non-specific signs, like patients may have generalized weakness, they may have tiredness, fatigue, they can also have itching, they may have all these kinds of symptoms. Specifically, no specific signs or symptoms which patient may present to, but other such symptoms can happen. Suppose if patient has back pain, like अगर stone वगैरह है तो pain may happen in the back and that may come in the front. There may be again difficulty in passing urine. So when all such things happen, we should suspect that there is some kidney problem. थैंक यू. तो जैसे आपने समझा, अभी डॉक्टर ऋषभ बता रहे हैं कि कोई एक ऐसा पर्टिकुलर सिम्टम नहीं है जो किडनी की बीमारी से हो सके। ये अलग अलग सिम्टम जो आपने बताया, जैसे सूजन होना, हो सकता है किडनी में दर्द हो सकता है यूरिन में ब्लड आए, या हो सकता है यूरिन की मात्रा कम हो जाए। तो ये सब सिम्टम किडनी की बीमारी के हो सकते हैं। ये और भी बीमारियों की वजह से हो सकते हैं, लेकिन अगर ऐसे सिम्टम आपको महसूस हो तो आप ज़रूर डॉक्टर के पास जाएं और ज़रूर जांच जो भी डॉक्टर आपके कहें वो कराएं। Dr. Siddharth, I have noticed, maybe it is my personal observation, in past 2 weeks I have seen young individuals. In fact, two girls that I have seen, they've come to me for various problems which did not seem to be related to kidney at all. One girl had swelling in one leg, and when we investigated her, we found out that she's having CKD and creatinine was 4 plus. And similarly, last week also I had a patient who again she was a young girl. I think she was around 18, 19. And she also, on investigation, we found out that she is having chronic kidney disease.
तो क्या ऐसा हो गया है कि आजकल यंग जनरेशन में किडनी की बीमारी ज्यादा हो रही है, उसके बारे में पता चल रहा है? इज इट समथिंग लाइक दैट? So basically, as probably rightly noted, हमने देखा गया है कि लास्ट ओवर 1 decade या 10 साल कहो, यंगर जनरेशन्स में बीमारियां ज़्यादा हो रही है. दे हैव स्टार्टेड सीइंग लॉट ऑफ ब्लड प्रेशर्स, लॉट ऑफ डायबिटीज, एंड CKD ऑफ अननोन etiology that has come up probably in India as a separate entity, जो एक कोई कारण नहीं है पर मुझे किडनी की बीमारी है. सो काफ़ी सारे यंग पेशेंट्स हैं जो कोई भी लक्षण नहीं है, कोई ना कोई कारण से कोई ना कोई डॉक्टर के पास जाते हैं और बेसिक टेस्ट करवाते हैं, एंड दे फाइंड आउट दैट उनको किडनी का प्रॉब्लम है. तो ओनली वे टू प्रॉब्ली डायग्नाइज एंड पिक देम अप, उनको जो तरीका है वो है कि हम सब पेशेंट्स को अभी गाइड करते हैं कि वंस यू आर, अब 20 साल की उम्र के हो गए हो, तो आपने आपका रूटीन ईयरली चेकअप करना चाहिए. वो जनरेशन चला गया जब भी मैं 50 का हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है और मैंने टेस्ट नहीं किया. सो प्रिवेंटिव मोड लाना जरूरी है, बिकॉज दिस डिसीजेस जो भी प्रेजेंट हो रहे हैं, इंक्लूडिंग किडनी, हार्ट, लाइक यू सेड, वी आर सीइंग लॉट ऑफ पुअर पंपिंग और डायलेटेड कार्डियोमाइपैथीज एट द एज ऑफ 15 एंड 20 दिस डेज, जो पहले कभी देखते नहीं थे. और काफी सारे किडनी फेलियर्स जो 5, 7, 8 क्रियाटिन या लास्ट स्टेज पे ही आते हैं, जहाँ पे आप कुछ कर भी नहीं सकते. और बहुत जगह पे ऐसा है कि हेडेक होता है पर ब्लड प्रेशर कभी मापते नहीं है, मापा है तो कभी दवाई लेते नहीं है. So only way to prevent is prevention and regular testing. And definitely at the end of the day, with the current stressful life and probably this, a disciplined life is only going to help you. There is no other way. थैंक यू, थैंक यू. आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपने बहुत अच्छी हिदायत दी हमारे श्रोताओं को कि यू शुड गेट अ जनरल चेकअप once you attain your adulthood at least once a year, because many and most of the diseases which are affecting us these days in majority are asymptomatic. We don't feel any symptoms of these diseases. So there's a lot of focus on chronic kidney disease, which would ultimately lead to kidney failure and lead to hemodialysis and renal replacement. So, Dr. Rishit, what in your opinion would be the biggest cause of kidney failure, of chronic kidney disease rather, that you're seeing in your practice, and probably what do you think? Welcome, ma'am. Please unmute yourself. Welcome, Dr. Manju Agrawal. Yeah. Introduce myself? No, I have introduced you already. We Oh, are great. all Thank keenly you. waiting for you. Thank you. I'm so sorry for this glitch. That's all right, ma'am. We understand. So most of the patients who are coming to nephrology OPDs with chronic kidney disease, most of these patients have diabetes. And पूरे world में as well as in India, most common cause of kidney failure or kidney disease is diabetes. Around 30 to 40% of kidney failure patients are having diabetes. And other than diabetes, blood pressure is the second most common cause. So both diabetes and blood pressure मिला के around 60 to 70% of kidney failure patients are because of mainly these two conditions. So diabetes or blood pressure, and the way that it progresses is कि अगर हमने इसको detect जल्दी किया and if it is detected early, उसको control किया, and if it is checked regularly, then we can prevent the progression of kidney disease in these patients. So these are the main two causes. Rarely kidney stones हो सकते हैं जो kidney failure कर सकते हैं, but they are not very significant. कभी कभी cyst की बीमारी या family में kidney problem होता है जो generation से चले आता है. अदर डेंटिटी ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस बोलते हैं, जिसमें किडनी में एक टाइप का इन्फ्लेमेशन हो जाता है, वो भी एक कॉज हो सकता है सीकेडी का. बट ये सब नॉट वेरी कॉमन है. मोस्ट कॉमन कॉज अगर मुझे पूछा जाए तो डायबिटीज है, और डायबिटीज के बाद ब्लड प्रेशर आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द किडनी प्रॉब्लम. Thank you. Dr. Manju, ma'am, we frequently see patients with hypertension, or in fact, only 30% or less of people suffering from hypertension have their blood pressure levels under control. So, as Dr. Rishit was also mentioning, that hypertension is also one of the important causes which leads to chronic kidney disease and ultimately failure and requiring the further consequences. So, how would you explain this to our viewers कि भाई, what is the role of hypertension? High blood pressure से kidney क्यों खराब होती है? So high blood pressure
as Dr. Rishabh said, is one of the very common causes of kidney failure. And in fact, about 20% of patients will develop eventually chronic kidney disease because of hypertension, and maybe some 2 to 5% will develop end-stage kidney disease also, given enough time. So now the problem is, I I think लोग समझते नहीं है कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना चाहिए. दूसरा मिथ है कि एक बार कंट्रोल हो गया ब्लड प्रेशर दवा खाने से, फिर दवा छोड़ दो. सो दवा को तो ब्लड प्रेशर की हम सब फिजिशियन लोगों को समझाना है, उन लोगों को कि जिंदगी भर दवा खानी है. सो यूजुअली रेगुलर फॉलो अप, रेगुलर कंट्रोल उसी से चलेगा. सो आई थिंक बार बार हमें वी हैव टू रीइटरेट टू पेशेंट्स, एंड द पेशेंट्स मस्ट अंडरस्टैंड, once you develop high blood pressure, it is for a lifetime, and उसको दवा खा के हमें कंट्रोल करना है, in addition to lifestyle improvement. So and थोड़ा salt intake restrict करना है, lifestyle improve करना है. So high blood pressure in itself क्यों किडनी को डैमेज करता है? Obviously high blood pressure is, let's say it is kind of a hydraulic pressure which is transmitted to the kidney, and the kidney doesn't like it. Kidney ki filtering units eventually will get affected by this high blood pressure, and they start getting dropping out by and by. So there is enough epidemiological data to say that hypertension does damage the kidney. It damages the heart also. It damages the brain also, in a way that your risk of hemorrhagic strokes will increase if the blood pressure is uncontrolled. So that's how blood pressure damages the kidney. Thank you, ma'am. I would just request you to elaborate on one more issue. You just said that almost 20% of the hypertensives would develop some form of CKD, and 3 to 4% may end up with renal replacement. So I just want our viewers to know from you कि अगर CKD किडनी की बीमारी हो जाए और हाइपरटेंशन, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हो, तो ऐसे लोगों को हार्ट अटैक और स्ट्रोक होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं. कम लोगों का रीनल रिप्लेसमेंट इसलिए हो पाता है कि वो उतने लंबे समय तक जिंदा ही नहीं रहते. सो आई वांट आवर व्यूअर्स टू अंडरस्टैंड हाउ सीरियस इट इज एक्चुअली. So let's say somebody develops high blood pressure at 40 years of age, and on an average you have 30 years to go on. So इस blood pressure को हम control नहीं करेंगे तो ये धीरे धीरे डैमेज करता रहेगा. Some patients will start leaking protein in urine. Some patients will have impairment of kidney function. Now chronic kidney disease जो एक चीज है जिसको भी होती है, his chances of getting heart disease and strokes go up much higher. In fact, chronic kidney disease के साथ 20 साल या 25 साल वाले की उतनी mortality हो जाती है जितने की 70 साल वाले की है cardiac disease से. So per se, chronic kidney disease and even small amounts of protein in urine are indicators that this person is more prone to cardiovascular disease. And when we say cardiovascular disease, it's everything. It's peripheral vascular disease, it's cardiac disease, it's cerebrovascular disease, which is circulation, दिमाग की circulation की बीमारी. So chronic kidney disease per se exposes you to a lot of other complications. So a common saying is, if you save your kidneys, you save your heart. Okay, it's been one of the logos of World Kidney Day at some point. So they had this logo where the kidneys are hugging the heart. So if we save kidneys, we save the heart. So patients must understand how important is kidney. And blood pressure इन सब चीजों को simultaneous damage कर रहा है, और एक बार chronic kidney disease हो गई, it's putting you at a higher risk of developing, let's say, cardiovascular disease, which includes the whole system. Thank you so much, ma'am. तो हम सबको ही समझना जरूरी है कि ब्लड प्रेशर तो अपने आप में खतरनाक है ही, बट अगर ब्लड प्रेशर के साथ किडनी की बीमारी हो जाए तो ऐसे लोगों को हार्ट अटैक और स्ट्रोक होने की आशंका कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है. थैंक यू सो मच मैम फॉर explaining all this. Now I'd like to bring up some topics which are of concern to even healthy people and not related to chronic kidney disease maybe. So I request all of you to contribute. Dr. Siddharth, people have this notion कि भाई हम ज़्यादा पानी पिएंगे तो हमारे खून साफ रहेगा और डिटॉक्सिफिकेशन होता रहेगा. I mean, इसके बारे में बहुत सारी myth हैं. Would you all, starting with Dr. Siddharth, like to say something about this? Yes, probably
in a patient who has history of probably stones, वहाँ पे एक पानी का requirement ज़्यादा है. But there is no specific concept what we know where probably taking more water improves your kidney. This is a myth because most of the patients with diabetes and who have already proteinuria and they have borderline creatinine see some local doctor and the relatives near about, and then they start saying अरे आपको चालू हो गया है पानी पीना चालू करो, and then they land up early with edema. So definitely what is advised is to patients that if you have probably not having any disease, 8 to 10 glass or probably somewhere between 2 to 2.5 liters a day, unless probably you are a worker, daily wage worker where you're sweating or your water losses is more, or you have some surgery sort of done. Most of our probably younger generations are in the corporate world now, and almost all of them day in day and out are in the AC. Very few people probably go out and feel the heat. So excessive water may not help because you may probably land up with electrolyte imbalance if you're forcefully taking water. We have seen a lot of polyuria and probably hypervolumic hyponatremia because of excessive congestion of water, where we label them as psychogenic polydipsia because they are taking excessive water. So पानी लिमिट में, या तो पानी 2 से 2.5 लीटर या 8 से 10 ग्लासेस के बीच में, अगर आपको कोई बीमारी नहीं है, अनलेस आपको स्टोन है या अनलेस आपको बोला गया है कि नहीं आपको पानी ज़्यादा पीना चाहिए, तो ही पानी पे ध्यान देना चाहिए. पानी ज़्यादा पीने से किडनी अच्छी नहीं होती, और पानी एकदम नहीं पीने से किडनी रातों रात बंद भी नहीं हो जाती. किडनी हैज इज ओन सेंसर्स जो अपने आप किडनी वाटर बैलेंस को मैनेज कर लेती है. Thank you. Ma'am, would you like to add something? Yeah, so I have this point to add. So I think this myth of drinking water, half the time blame the beauticians for it. So they say Yes. skin glow karegi, skin glow karegi, skin has to glow, it'll glow, not because of water. And the other point which Dr. Siddharth also made, kidney has a great regulation. If I drink a Coca-Cola now, let's say 500 ml, I'll put it out in the next, let's say, 2 se 4 ghanta. If I don't drink water the whole day, my kidney will conserve water. And the second Exactly. defense God has given us is the phenomena of thirst. So thirst is a great mechanism given to us by God. So if we are short on water for whatever reason, if we all know if we sweat it out in the summer, we feel thirsty, we drink more. But this myth that one must drink 10 glasses, people keep a bottle, keep drinking, I see no reason to do it. I see absolutely no reason to do it. And then it gives you this false sense of security. हम तो पानी पी रहे हैं, हमारी किडनी बहुत अच्छी है. So it's I think a funny game, and it's become so rampant and so popular, it's not even funny. So I think Very somewhere we should rely on, according to me, one drinks water for 2 reasons. One is thirst, that's a great defense mechanism. Second is social reasons, that we have a guest, okay, let's have a cup of tea, let's have a cup of coffee, stuff like that. I feel like having coffee. And small amounts, my kidney will manage it. But large amounts, especially when you have chronic kidney disease, can end you up in problems. Thank you, ma'am. I think these are very rightly pointed out by all of you. That ज़्यादा पानी पीने से कोई फायदा नहीं होता. आप शरीर में इतना अच्छा मैकेनिज्म है, जैसे मैडम ने बताया, प्यास का, जब भी आपको प्यास लगे आप पानी जरूर पीजिए. अपनी प्यास को न दबाएं, और जबरदस्ती भी पानी ना पिए, उसका कोई फायदा आपको नहीं होगा. Thank you so much, ma'am. Next question I'd like to ask is, ma'am, let's start with you. So, what do the kidneys have to do with our bones? लोग कहते हैं कि bones की जो अगर kidney की बीमारी होती है तो osteoporosis हो जाता है. Is there some relationship between the bones and our kidneys? So you asked me? Yes, ma'am. You can start. Okay. So kidneys and bones have a great correlation, or let's say interlinking. So everyone has heard of something called vitamin D. So vitamin D is processed in the kidney to a finer active form, which is what is effective in bone health. So if you have kidney disease, somewhere the formation of bone, the dissolution, so bone has something called a turnover, like skin turnover. It's making it, it's dissolving. So that phenomena goes haywire. The bones can become brittle, though that is not really what is technically osteoporosis, but
bone disease of kidney disease, in fact, is a big disorder. We call it mineral bone disorder now. So it includes the bone health, it includes chemical, so calcium, phosphorus, as we measure it in the blood, they may go up and down. And the third thing is, once these chemicals are not in, let's say, normal range, our blood vessels start getting calcified in chronic kidney disease. And that is a very ominous sign. So somewhere bones and kidney are interrelated. So anybody who has chronic kidney disease, the nephrologist sees to it that his bone health is reasonably maintained, that we take maybe we need vitamin D supplements, maybe we need to look at calcium phosphorus and maintain it well, and we need regular bone screening. Osteoporosis, coming to osteoporosis, by definition, osteoporosis is when your vitamin D is normal, there is a hormone called parathyroid that is normal, and your calcium phosphorus are within the normal range. Now, osteoporosis is such a common disorder in all of us that somewhere chronic kidney disease and osteoporosis will start overlapping. For example, dialysis population. Now, dialysis population may also have osteoporosis in addition to the mineral bone disorder of kidney disease. So that is one group where we need to kind of monitor these chemistries. Also, look at their DEXA scans or bone scans to see how much osteoporosis and address it, osteoporosis, because our ultimate aim is to reduce their fracture risk. That is our aim. And dialysis patients and chronic kidney disease patients do have a higher fracture risk. We need to avoid that. That's our last aim. Thank you, ma'am. That was all very interesting. Dr. Rishit, tell us please about pregnancy. Are there some conditions during pregnancy which may injure or cause injury to the kidneys, and pregnant ladies become more susceptible to kidney disease? ऐसा कुछ है क्या? Please उसके बारे में कुछ elaborate करिए. Yes. So during pregnancy, a lot of changes happen in the woman's body. उनका जो blood volume रहता है वो बढ़ जाता है, जो kidney का filtration है वो बढ़ जाता है. Sometimes the uterus, which is increasing in size, can press on the kidney and the kidneys may dilate. Kabhi there may be increased chances of infection. So if you specifically ask me what risks are there with kidneys during pregnancy, then one of the common risks is that they are more prone to develop infections. So any pregnant female who has bacteria in the which is detected, or there is a urinary tract infection which is detected, it should be treated because it can affect the baby's health, it can affect the mother's health. Second important thing in pregnancy is blood pressure. So any blood pressure, if it rises, especially after 20th week of pregnancy, it is very important and it can have a lot of effects on the mother's health as well as baby's health. It can retard the growth, etc. So for pregnant females, it is very important that during each antenatal visit, if they have any symptoms in urine, they report. If they have any swelling in the feet, they should report. If they have any visual disturbances, they should report. If they have any headache, etc., they should report, and they should get their blood pressures checked regularly. If blood pressure is high, they should check for any protein if it is going in the urine, because this is a condition called as preeclampsia. So in this situation, blood pressure has to be controlled. There are certain other rare diseases which are more severe, but they are not very common, but all of them can be prevented if they are properly evaluated during the pregnancy. But two main problems which happen are that one is high blood pressure, which can happen, and second is infection, repeated infection, which can happen during pregnancy, which can affect the baby's growth also. Thank you. These are actual very important topics. तो अगर कोई आपके घर में प्रेग्नेंट हैं, या श्रोता आप प्रेग्नेंट हैं, और अपना ब्लड प्रेशर ज़रूर मॉनिटर करते रहिए, देखते रहिए कि ब्लड प्रेशर ना बढ़े, और अगर स्वेलिंग हो, ऐसे कुछ भी लक्षण है, तो आप ज़रूर अपने डॉक्टर को दिखाएं, बिकॉज इस सब से भी किडनी को डैमेज हो सकता है. Now again, I would consider a very important question. Let's start with Dr. Siddharth, and then we'll ask others for opinion also. I am a diabetologist and I frequently see patients with complications of diabetes
who are already going into chronic kidney disease जिनका क्रिएटिनिन बढ़ता है, तो हम समझाने की कोशिश करते हैं कि क्रिएटिनिन को कम करने के लिए कोई दवा नहीं है, कोई उसका इलाज नहीं है। बट बहुत सारे ऐसे और कुछ कंपनीज हैं जो कुछ दवाइयाँ बेचती हैं, बोलती हैं कि हम आपको ठीक कर देंगे, और दोज पीपल ड्रॉप आउट from the physicians or nephrologist care, they switch over to alternate methods of treatment, but ultimately they come back very quickly with severely progressed kidney disease. So first of all, Dr. Siddharth, आपका क्या इस पे opinion है? Do you also see such cases? Yes, yes. So definitely, as a part of nephrology practice, ये तो रोज आना है. So I think not every day. Every day we must be seeing more than 10 times where this is asked to us. So I think what हमारा जो explanation है वो वही रहता है कि ये जो किडनी की बीमारी है, especially diabetic kidney disease, it's a slow progressive disease. Once you have started with heavy proteinuria, high blood pressure, you are going to land up into either dialysis or transplant somewhere between 4 and 10 years. Depending on how you want your lifestyle to be, if you have a very good sugar control, अगर आपका बीपी कंट्रोल रह रहा है, प्रोटीन कंट्रोल कर पा रहे, लाइक मैं गुज्जू हूँ, तो अगर आप हमारे गुजराती मारवाड़ीज को हम स्पेसिफिकली बोलते हैं, अगर आप आपका मोटापा और वेट अच्छे से कंट्रोल कर पा रहे हैं, एंड इफ यू आर एक्सरसाइजिंग, दिस आर द ओनली कीज. जो भी मेडिसिन हम देते हैं, दिस बेसिकली जस्ट ट्राइज टू डिक्रीज प्रोटीन, ट्राइज टू कंट्रोल द ब्लड प्रेशर वेल, ट्राइज टू कंट्रोल द शुगर वेल. अभी जब बात आती है ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की, सो एज इन ऑल फील्ड्स, जो सबसे ज़्यादा काम करता है वो है मार्केटिंग. सो आप जितना मार्केटिंग करो, आपकी भले कंपनी ना हो, पर अगर आप मार्केटिंग अच्छा कर रहे हो तो इट इज़ गोइंग टू सेल, बिकॉज वो वहाँ रिजल्ट्स है नहीं है. आई टेल माई पेशेंट्स कि आप अगर मेरे से एक दवाई लेके भी जाते हो तो आप कॉस्ट देखते हो, आप दवाई का कंटेंट पूछते हो मुझसे, और आप सब लिख के लाते हो. वहाँ पे जब आपको चूरन पाउडर भस्म दिया जाता है, ना आपको उसमें कंटेंट पता है, ना एक्सपायरी डेट पता है, फिर भी आप लेते हो, बिकॉज इट्स अ ब्लाइंड बिलीफ. And I have seen patients in Bombay where monthly therapy is lakhs. lakh rupee, 2 lakh rupee की therapy है, 3 महीना 4 महीना you get in the things and then at the end वो progress होना है. Because अगर वैसी कोई दवाई होती तो simple answer to the patients is रजनीकांत, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज ने किडनी बदली या डायलिसिस नहीं करवाया होता, because they can afford the best. So अगर ऐसा कोई दवाई है तो वो यूज होना चाहिए. सो ऑन अ फोरम वो आंसर सबके लिए जरूरी होना चाहिए कि अगर रजनीकांत को किडनी बदली कराना या डायलिसिस का जरूरत पड़ सकता है, तो हम तो सामान्य लोग हैं, तो अगर वो वहाँ कोई भी आयुर्वेदिक या कोई अल्टरनेटिव थेरेपी या कोई भी फॉरेन से भी थेरेपी लाके वो डायलिसिस या ट्रांसप्लांट नहीं रोक सके, तो आई डोंट थिंक बॉम्बे में या इंडिया में एटलीस्ट ऐसा कोई डॉक्टर है जो ऐसा कोई मैजिक कर सकता है. सो आई थिंक दैट विल बी माय टेक. बिल्कुल 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 सही. मैडम, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग? नहीं, ऐसे लोग तो एज ही पुट्स इट, वी सी देम एवरी डे, डे इन एंड डे आउट. आई थिंक समवेयर इंडियन कल्चर, हम सब ऐसी बातों में विश्वास रखते हैं. हमने कोविड में बहुत देख लिया कि काढ़ा सब लोगों ने पी लिया, इसने पी लिया, हालांकि कई लोगों को लिवर डैमेज हो गया. सो बॉटम लाइन इज, आई थिंक समवेयर, आई होप इंडियन जनता स्टार्ट्स बिलीविंग इन साइंस. सो वैक्सीनेशन के कितने मिथ्स रहे, सो किडनी के बारे में भी उतने ही मिथ हैं. मैं लोगों को बोलती हूँ, हमें इलाज एक नंबर का नहीं करना, क्रिएटिनिन को कम करना हमारा एम नहीं है. हमारा एम आपको अच्छा रखना है. सो जो अब हम थेरेपी कर रहे हैं, इससे वी आर ट्राइंग टू मेक यू फील हेल्दी, फील गुड. डायलिसिस तक जब तक आप पहुंचेंगे तब तक आपके एटलीस्ट काम करते रहें, अच्छे रहें. आइडिया इज टू मेंटेन ए ओवरऑल हेल्थ rather than एक नंबर को ऊपर जो चला गया उसको नीचे लाना. सो साइंस पे विश्वास, लेट्स होप आ जाए किसी दिन लोगों का. Thank you, ma'am. Dr. Rishit, there's a question which people frequently ask me as a physician, and you had mentioned about that, about the frothing of urine. Does that signify any kidney disease? Because this is a very common question. Right. So normally, usually patients do not notice that they are having frothy of urine. Like usually हमारे पास ऐसे patients normally नहीं आते जो बोलते हैं हमें frothiness of urine है, but just because they read somewhere they know. Yes, definitely frothing of urine is a sign of kidney disease because it indicates that there is protein leak in the urine which is happening, because of which there are a lot of bubbles which happen in the urine. पर बहुत बार प्रॉब्लम क्या होता है कि आजकल सबके यहाँ इंग्लिश टॉयलेट्स हैं which have detergents and all other things,
एंड नॉर्मल पीपल ऑल्सो अगर वो यूरिनेट करेंगे तो थोड़ा फ्रॉथ तो आएगा. So not necessarily that it is frothiness of urine that they may experience. बहुत सारे थियरीज हैं उसके ऊपर के 2-3 लेयर से ज्यादा फ्रॉथ होनी चाहिए तो शायद से प्रोटीन हो सकता है, but because a lot of places it is difficult to say. But अगर किसी को लगता है कि हाँ प्रोटीन अगर है तो फिर उसका कॉम्प्लिकेशन करना चाहिए. The frothiness is a sign of kidney problem. Thank you so much. Thank you so much. Dr. Manju ma'am, I'd request you to tell our viewers about the importance of salt intake, adequate salt intake. Is it Adequate. somehow related to kidney disease? I mean, adequate meaning. Yeah, we extra salt understand. intake, extra salt. Yes. So salt intake somewhere is related to hypertension. देखिए हमारी बेसिकली जो भी हम सॉल्ट खाते हैं हमारी किडनीज को निकालना होता है, ठीक है. सो अब उसमें हम में से कुछ लोग हैं जो कि जिसको हम सॉल्ट सेंसिटिव हाइपरटेंशन कहते हैं, सॉल्ट सेंसिटिव पीपल कहते हैं. इसका ये मतलब है कि लेट्स से मैंने सॉल्ट एक्स्ट्रा खाती हूं मैं और मेरी किडनी उसको निकाल नहीं पाती and I start developing high blood pressure. So that is what is called salt sensitivity. कुछ लोग हैं जिनको फर्क नहीं पड़ेगा सॉल्ट एक्स्ट्रा खाने से, बट मेजॉरिटी लोगों को फर्क पड़ेगा शायद. सो हाई सॉल्ट इनटेक इसलिए अच्छी बात नहीं है. एंड एज अ सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी, कुछ सोसाइटीज हैं वर्ल्ड में जैसे इंडिया, जापान एंड पॉसिबली चाइना, हम लोगों की डाइट में बहुत ज्यादा नमक होता है. सो हमारे चांसेस हाई ब्लड प्रेशर डेवलप होने के ज्यादा बढ़ जाते हैं. हाई ब्लड प्रेशर इन टर्न विल, एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, विल कॉज किडनी डैमेज एंड वेरियस अदर थिंग्स. सो इसलिए ज्यादा नमक नहीं खाना चाहिए मोस्टली लोगों को. सो एवरेज डाइट इनटेक, फॉर एग्जांपल वेस्टर्न डाइट का सोडियम इनटेक 2-4 ग्राम है मुश्किल से. हम लोगों का कहीं 6-7-8 ग्राम होगा. कुछ लोग और भी ज्यादा खाते हैं. जापान एंड चाइना का और भी ज्यादा है. सो इसलिए सॉल्ट को एक्स्ट्रा ज्यादा नहीं खाना चाहिए. हमको थोड़ी आदत अनुसार कम ही खाना चाहिए नमक, क्योंकि उससे जो ससेप्टेबल लोग हैं, मैं नहीं कह रही सब हैं ससेप्टेबल, जो ससेप्टेबल लोग हैं उनको ब्लड प्रेशर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. Thank you, ma'am. This is really very important. I've seen there's a study which was conducted in Delhi in which the average, even though not a huge study, but in that the average salt intake was 10 grams. मतलब हम almost 3 से 4 गुना ज़्यादा नमक का इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जो ज़्यादा नमक लेने से हो सकती हैं. जैसे हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, गैस्ट्रिक अल्सर हो सकते हैं, और उसकी वजह से बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं. सो सॉल्ट इनटेक हैज टू बी एडिक्वेट. कम से कम नमक लें, और नमक नहीं भी लेंगे तो भी चलेगा बिकॉज वट एवर वी ईट हैज सॉल्ट. मैम, प्लीज टेल अस about our diet, and I would request each one of you to contribute further on. Is there anything called kidney friendly diet, or are there some things that we have in our diet which may be adversely affecting our kidneys? देखिए, according to me, for normal healthy people, I don't think there is any healthy kidney friendly diet. So अगर हम लोग नॉर्मल खाना खा रहे हैं, नॉर्मल शुड बी बैलेंस्ड. वी शुड नॉट गेन वेट. वी शुड बी ऑन, let's say, not if low salt diet, not high salt diet, and normal protein intake जो एक कल्चरली हम लोग खाते रहते हैं. एक कुछ लोगों का बहुत विश्वास है कि हाई प्रोटीन खाने से किडनी डैमेज हो जाती है. लेकिन उसमें भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है. जो हमारा एवरेज इंडियन इंसान का जो प्रोटीन इंटेक है वो नॉर्मल इंसान से पहले ही, नॉर्मल WHO रिकमेंडेशन से, मोस्ट ऑफ अस ईट लेसर प्रोटीन. वो अलग बात है कि कुछ लोग आजकल जिमिंग का बहुत फैशन हो गया है और उसमें ये जो सब प्रोटीन सब्स्टिट्यूट्स लेते हैं, मैं उनकी एडवोकेसी नहीं करूंगी,
बट अदरवाइज नॉर्मल डाइट खाते रहें। बाकी जो किडनी फ्रेंडली डाइट है डिपेंड करता है कि आपको कोई बीमारी है या नहीं है। अगर लेट्स से ब्लड प्रेशर है, नमक डेफिनेटली कम करना चाहिए। क्रॉनिक किडनी डिजीज ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है एंड थोड़ी सी हायर स्टेजेस में है, तब आपको डाइट में पोटेशियम कम करना पड़ेगा। उसमें भी कुछ लोग सारा प्रोटीन बंद कर देते हैं, वो भी गलत है, क्योंकि ओवर द इयर्स क्रॉनिक किडनी डिजीज ने तो जो बढ़ना है बढ़ेगी, लेकिन सारा हमारा मसल मास वगैरह लो प्रोटीन इंटेक खा के खत्म हो जाएगा। अगेन हमारा आइडिया एक नंबर को ट्रीट करने का नहीं है, विच इज यूरिया क्रिएटिनिन। हमारा आइडिया है एक इंसान को हेल्दी रखने का। सो जिसके लिए कि एक एवरेज प्रोटीन इंटेक विच शुड बी अबाउट 0.8 to 1 ग्राम पर किलोग्राम पर डे खाते रहना चाहिए, और हम सब उससे कम खाते हैं। अगर मैं भी अपना प्रोटीन इंटेक कैलकुलेट करूं, क्योंकि मैं एक वेजिटेरियन हूं बाय चॉइस, बहुत कम है, मुश्किल से 20 ग्राम भी नहीं खाती होंगी मैं पूरे दिन में। एंड हम जो प्रोटीन खाते भी हैं वो जनरली पुअर क्वालिटी है, विच इज दालें, उसमें प्रोटीन है बहुत कम है और पुअर क्वालिटी है। एंड गुड क्वालिटी प्रोटीन, अगर किसी को किडनी डिजीज है, बेटर क्वालिटी प्रोटीन खाना चाहिए अगर हम खा सकते हैं तो, लेकिन वो सिर्फ एनिमल प्रोटीन जो होता है वो बेटर क्वालिटी होता है। फॉर एग्जाम्पल फिश इज द बेस्ट क्वालिटी प्रोटीन, चिकन वुड बी अनदर वन। दूध का प्रोटीन ठीक है, वेजिटेरियन में सिर्फ सोयाबीन का जो प्रोटीन है वो एक हाई क्वालिटी प्रोटीन माना जाता है। सो दैट इज व्हाट आई वुड से इज अ किडनी फ्रेंडली और अ किडनी नॉन फ्रेंडली डाइट। Thank you. Dr. Siddharth, would you like to contribute something about diet? Please unmute yourself, Dr. Siddharth. Diet is my main domain, so definitely I'll be talking on diet. So now basically, right, already Dr. Agarwal covered a lot of things. So all the time the question arises of salt intake, protein intake. See, we as a nephrologist write down values 0.8 gram per kg, 0.6 gram per kg. I have dietitians to all my clinics. It is practically not possible to calculate. We have even the measuring spoons which we give to patients. What I tell my patients is वैसा diet जहाँ आपका वजन, शुगर, बीपी, मोटापा, everything is controlled, that I would probably recommend as a perfect diet. Because बहुत सारे patients हैं जिनकी activity zero है, मैं 2 ही चपाती सुबह, 2 चपाती शाम को, but that calorie also is making them heavy. So a diet which will make you probably reach your BMI or reach your weight target, which will make you reach your sugar target, and which will make you reach your BP target. Because these are the values which patient can understand and हम समझ सकते हैं। वर्बली बोलने से कि मैंने घर पे कुछ नहीं खाया, या कई बार क्रैश डाइट करते हफ्ते एक बार सैलड ही खाया और बाद में फिर जितना आया उतना कवर कर लिया। सो आई थिंक ऑल ऑफ अस इन द रूटीन थिंग, एज वी राइटली स्टार्टेड विद अवर टॉक, दैट यंगर जनरेशन बहुत ज़्यादा आ रहा है। यू इमेजिन ईटिंग अ 1000 कैलोरी बर्गर, एक ही बार आप बाहर जाते हो फुल्ली लोडेड विद चीज़, आप एक बर्गर खा लेते हो एंड देन यू से कि मैं पूरा हफ्ता कुछ नहीं खा रहा हूँ। सो आई थिंक इट नीड्स अ बैलेंस डाइट, एंड हर एक को वो समझना है कि वो ज़माना चले गया। इवन इफ यू आर एक्सरसाइजिंग टुडे, we have seen lot of deaths in the recent in the Bollywood world. All of them were fit to the core. Last is Shane Warne. Cricketers, fitness, Siddharth Shukla Lelo, or probably you take anyone, they were all gym goers, 4 hours of gym every day. Still they had some or the other cardiac events because probably their diet and lifestyle was not good. So खाली fit रहने से नहीं होने वाला है. It has to be shown physically fit, biochemical wise fit, and you should feel mentally and healthy also fit. So if you are fit from all the ends but you are running too much of stress, that is also not going to help. So I think a compromised diet, probably more of salads and fruits, and to cut down on processed and carbohydrates is going to be the key on long term for all diseases. Whatever you see, whether it is stone, whether it is probably diabetes, whether it is kidney or heart, at the end तो सब वही बोलते हैं कि भाई तेल तला नमक वाला मत खाइए. So that should probably inculcate from the time the child becomes an adolescent and he starts realizing what he should eat. So this will be the Definitely. key message for all of them probably. Definitely. I think आपने बहुत अच्छा बोला डॉक्टर सिद्धार्थ की, जो तीनों चीज़ें, एक फिट बॉडी और एक हेल्दी डाइट और एक your lifestyle without stress is also very important for an overall healthy life, which would ultimately lead to a healthy kidney. Dr. Rishit, is there any role of high cholesterol? Because since we are talking about diet.
अगर ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा रहते हैं, so somehow can that adversely affect the working of kidneys or cause kidney disease? Cholesterol is high, it can definitely affect, because cholesterol जो रहता है, it's a fat which blood vessels के अंदर deposit होता है, and if it gets deposited in the blood vessels, it may narrow the blood vessels, so it can affect the vessels in the brain, it can affect the vessel of the heart, तो हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओल्ड एज में कभी कभी किडनी डिजीज भी होती है, बिकॉज जो ब्लड वेसल्स किडनी को सप्लाई करती हैं उसमें भी ये प्लाक्स डिपॉजिट हो सकते हैं, उससे ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, जिसकी वजह से किडनी का फंक्शनिंग भी कम हो जाता है, उससे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, पेशेंट्स कैन गो इनटू पल्मोनरी एडीमा, फ्लूइड ओवरलोड वगैरह, जिसको बोलना है स्टेनोसिस। आर्टरी का जो कैलिबर है वो छोटा हो जाता है, तो ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से किडनी अफेक्ट होती है। एंड बाकी का, बिकॉज कोलेस्ट्रॉल इज एनीवेज बैड, क्योंकि बाकी के सारे प्रॉब्लम्स भी होते हैं, इन द सेम वे इट आल्सो अफेक्ट्स द किडनी। सो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली बोथ वेज हाई कोलेस्ट्रॉल विल अफेक्ट द किडनी। Thank you, Dr. Rishit. Dr. Manju ma'am, you touched upon the gym and the supplements which people who go to gym take. You know, I've seen young boy of about 23 years suffering from kidney failure after taking some supplements which were provided in the gym. So, ma'am, would you like to elaborate on that कि ये जो जिम में जाते हैं और क्रिएटिनिन के सप्लीमेंट लेते हैं, I mean, क्या उनसे नुकसान हो सकता है? I don't know. I mean, ये जो supplements हैं, to best of my knowledge, 2-3 तरह के होते हैं। एक तो उसमें एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स होते हैं, दूसरा एक बहुत हाई प्रोटीन का वो इनटेक करते रहते हैं, समथिंग लाइक 2-3 grams per kg per day, that will amount to a lot of protein. तीसरा, कई बार, once we had a patient who ended up with acute kidney injury in our ICU, जिसने कि कुछ वो एक इंजेक्शन लगाता था जिम में एक्सरसाइज करने से पहले. So this was some, I think, a vasopressor kind of a thing. So they take these boosting injections which increases their heart rate. So these things are obviously not good. और एक कोई keto prone diets होती हैं, they again I would say are not good. So ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि directly kidney को damage करेगा, but over the time a combination of all these supplements in various combinations is not good for the kidney. And somewhere there are also, I think, some alternative medicines here which are added, which may contain anything. So Yes. one can't say कि किससे exactly क्या होगा. I don't think direct cause and effect relationship किसी ने establish करी है अभी तक, but definitely I don't think it's a good idea to take these hazard supplements, I would say. Thank you, thank you. Now, since we are talking about supplements, maybe Dr. Siddharth, would you like to elaborate? क्या जो over the counter medication लोग अक्सर लेते हैं, can they also be detrimental for kidney? और कौन कौन सी दवाइयाँ हैं? If you could specify कि भाई ये दवाई आप बिना डॉक्टर से पूछ के ज़्यादा दिन मत लो, ऐसा कुछ है क्या? तो काफ़ी सारी दवाइयाँ है, डेफिनेटली लिस्ट ऑफ मेडिसिन है। कॉमन दवाइयाँ जो काफ़ी सारे पेशेंट्स ओवर द काउंटर ले रहे हैं या आपको एक आदत लग जाती है बोल सकते हैं हम, उसमें एक आता है हमारा एसिडिटी का पिल्स। सो एक कैसा है कि एक बार डॉक्टर ने लिख के दे दिया 10 दिन के लिए ले लीजिए, हमको अच्छा लगते रहता है, हम खाते रहते हैं। तो पेशेंट्स को बोले अरे इसके बगैर तो मुझे चलता ही नहीं है। सो दैट इज द कॉमन आंसर विच दे गिव। सेकेंड, पेन के टैबलेट्स, हम ब्रूफेन ले ले या हम डाइक्लोफिनैक ले ले या एसिक्लोफिनैक ले ले, ये कॉमन मेडिसिन से अगेन ओवर द काउंटर। आप 55 के हो, आप मोटापा है, आपको वो नहीं बिलीव करना है कि आपका मोटापा के वजह से घुटना दर्द हो रहा है, बट बिकॉज वो डॉक्टर पेन की गोलियों से आपका दर्द ठीक हो रहा है, मैं जो गोली बंद कर रहा हूँ उससे मैं अच्छा डॉक्टर नहीं हूँ, वो अच्छा डॉक्टर है। सो वो एक कंसेप्ट की वजह से वापस ही आ जाता है कि नहीं, वो डॉक्टर की दवाई से मुझे अच्छा लगता है, आपसे नहीं लगता है। सो ये दो कॉमन। एंड थर्ड इज ऑफकोर्स काफ़ी सारे टीबी मेडिसिन है, एंटीबायोटिक मेडिसिन है, हर एक गोली की एक लिमिटेशन है। एंड इट्स नॉट लाइक कि आपको नहीं लेना है, अगर आप फ्रैक्चर हो गया तो आपको गोली देनी है डॉक्टर ने, but it has to be an under observation. And if you are a high risk patient, if you are diabetic, hypertensive and a borderline kidney patient, whatever doctor you are consulting or you are yourself should know कि आपको जो दवाई लेनी है वो आपको हार्म कर सकती है। तो ये जो मिथ है कि नहीं मुझे कोई दवाई लेने से प्रॉब्लम होता ही नहीं है, probably leads to long term this. And I think arthritis and acidity, these are two major reasons where we see
either an NSAID or a PPI induced probably nephropathy, and that is the most common things what we see on a day-to-day term. So I think these are the two जो हमको लोगों को समझाना है कि हर एक गोली लीजिए, हर एक को लिमिटेशन में लीजिए, जो भी ज्यादा लेंगे तो उससे वो नुकसान करेगा ही करेगा. ये बहुत ज़रूरी है कि दवाई उतनी ही लें, तभी लें जब आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, उतने ही दिनों के लिए लें. एंड आई थिंक दिस गोज़ फॉर ऑल द क्रॉनिक डिजीज़. In fact, we see the same thing in patients with diabetes and hypertension. वो एक बार पर्चा लिखवा लेते हैं तो 3-4 साल तक लेते रहते हैं and they just don't turn back thinking कि हमने तो दिखा दिया, डॉक्टर ने दवाई लिखी है. And what is very unfortunate is that at times people don't monitor their blood sugar, blood pressure. जैसे हमने अभी इतनी सारी चर्चा की कि आप ब्लड प्रेशर चेक भी कराएं और ब्लड शुगर चेक भी कराएं, बिकॉज विदाउट मॉनिटरिंग हमें नहीं पता चलेगा कि हमारा ब्लड शुगर कंट्रोल में है कि नहीं और हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है कि नहीं. सो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. डॉक्टर ऋषित, अभी प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट किडनी स्टोन्स, बिकॉज दिस इज वन टॉपिक व्हिच हैज बीन लेफ्ट आउट एज ऑफ इट. दिस इज क्वाइट अ कॉमन प्रॉब्लम. सो किडनी स्टोन होने की वजह क्या है, कुछ संक्षिप्त में प्लीज टेल आवर लिसनर्स. तो In किडनी short. स्टोन्स काफी कॉमन प्रॉब्लम है. किडनी स्टोन्स के कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, और किडनी स्टोन्स पहले मैं बताऊंगा कि किडनी स्टोन्स होते क्यों हैं. बिकॉज कुछ सब्सटेंसेस रहते हैं हमारे बॉडी में, अगर उनका नॉर्मली अगर थोड़ा ही सब्सटेंस है लिक्विड स्टेट में तो वो किडनी स्टोन नहीं करेगा, पर अगर उसका जो कंटेंट है वो बढ़ते जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो सैचुरेट होके वो स्टोन बन जाएगा. तो जैसे कैल्शियम हो गया है या ऑक्सलेट हो गया है या यूरिक एसिड है, या कुछ सब्सटेंसेस हैं जो बढ़ने के वजह से स्टोन हो सकता है. स्टोन के कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे अगर फैमिली में स्टोन्स हैं तो कभी कभी जेनेटिकली आपको स्टोन डिजीज हो सकती है. अगर आप ओबीज हैं तो देयर इज एन इंक्रीज रिस्क ऑफ स्टोन डिजीज जो आपके अंदर हो सकती है. कभी कभी कोई पर्टिकुलर डाइट्स अगर आपने ज्यादा ले ली, जैसे कोविड में बहुत लोगों ने बहुत ज्यादा विटामिन सी वगैरह दिया है जिसकी वजह से ऑक्सलेट वगैरह कुछ अगर कोई बॉवल की डिजीज है जैसे इंफ्लेमेटरी बॉवल डिजीज वगैरह हो गई, तो ये डिजीज हैं जिसमें लोगों के केसेस काफी ज्यादा हैं. तो आइदर कुछ कभी कभी जो कुछ सब्सटेंसेस रहते हैं जो स्टोन को प्रिवेंट करते हैं, जैसे मैग्नीशियम है, साइट्रेट है, अगर इनका लेवल कम हो जाता है तो इसके वजह से भी स्टोन्स हो सकते हैं. नॉर्मली अगर एक बार स्टोन होता है तो सेकेंड टाइम स्टोन होने का चांस और 20 to 30 टाइम. तो स्टोन्स ये चीजों के वजह से हो सकते हैं. और नॉर्मली स्टोन्स अगर होंगे तो फिर पेशेंट्स विल हैव द सेम सिम्टम्स. तो उन्हें अगर स्टोन थोड़ा बड़ा है या पैसेज को ब्लॉक कर रहा है तो उनको पेन होगा, बैक में पेन होगा जो रेडिएट होकर नीचे तक आएगा, या फिर उन्हें यूरिन पास करने में कुछ डिफिकल्टी होगी, यूरिन में कभी कभी ब्लड करेंगे. तो ये सब स्टोन्स के सिम्टम्स हो सकते हैं जो पेशेंट्स को हो सकते हैं. नॉर्मली अदर कॉमन क्वेश्चन जो लोग हैं वो है कि स्टोन, तो बहुत सारे फैक्टर्स पे ये भी डिपेंड करेगा कि स्टोन पास होगा या नहीं. अगर लेस देन 7 mm का स्टोन है चांसेस ज्यादा है कि वो पास हो जाए, पर अगर 7 mm के ऊपर का स्टोन है तो नॉर्मली वो पास नहीं होने के चांसेस कम है, और उसे कभी कभी सर्जरी या कुछ इंटरवेंशन लग सकता है. और स्टोन डिजीज को निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज अगर स्टोन किडनी में अगर स्टोन है तो किडनी में इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं. तो ये शुड बी नेग्लेक्टेड. थैंक यू. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जो आपने आखिर में कहा कि अगर आपकी किडनी में स्टोन है तो उसको निग्लेक्ट ना करें. उसके इलाज के लिए जो भी आपको कराना है वो ज़रूर करें. मैम, I'd like to come to you with a very important topic, that is kidney replacement or renal replacement therapy, because it happens that the disease progresses आखिर में और कोई इलाज नहीं बचता. So tell our viewers about renal replacement. ये क्या है, किसको कराना चाहिए,
और कैसे इसकी तैयारी करना चाहिए, इन शॉर्ट कि लोगों को इसके बारे में पता चले एंड दे हैव कॉन्फिडेंस इन इट because many people still are afraid of taking this up when doctors recommend. देखिए, रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी नाम से ही पता चलता है कि ये किडनी की रिप्लेसमेंट कर रहा है। सो किसको चाहिए? वो ये है कि जिसकी किडनीज इतनी खराब हो गई हैं अब कि उसकी एक रीजनेबल क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन नहीं हो रही। सो यूजुअल सिम्टम्स होंगे, भूख नहीं लग रही, कुछ लोगों को उल्टी आने लग जाएगी, कुछ लोगों को कमजोरी होगी, कुछ सटल सिम्टम होते हैं, कुछ ग्रॉस सिम्टम्स होते हैं। एक बार आपके डॉक्टर्स ने या नेफ्रोलॉजिस्ट ने डिसाइड करा है कि अब आपको आपकी किडनीज अपनी सफिशिएंट नहीं है आपको मेंटेन करने के लिए और आपको रिप्लेसमेंट थेरेपी की जरूरत है। अब इसमें हमारे पास 2 या 3 चॉइसेस समझ लीजिए। तो एक मोटी मोटी 2 चॉइसेस कि एक डायलिसिस हो सकता है, दूसरा ट्रांसप्लांट हो सकता है। सो डायलिसिस में 2 वेराइटीज हैं, एक पेरिटोनियल डायलिसिस या जिसको कॉमन भाषा में बेली डायलिसिस भी कहा जाता है क्योंकि ये पेट से होती है, पेरिटोनियल डायलिसिस हो गई, और एक कॉमन ब्लड डायलिसिस जो आमतौर पे आजकल मोस्ट लेमेन को पता है कि क्या होता है, इसको हम हीमोडायलिसिस कहते हैं। और दूसरा मेन ग्रुप है ट्रांसप्लांट। सो पहले डायलिसिस को ले लेते हैं। देखिए, इंडिया में क्या होता है कि डायलिसिस से बहुत डर लगता है सब लोगों को। कुछ लोग सोचते हैं कि ये पेनफुल प्रोसीजर है, ऐसा नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि डायलिसिस पे तो मेरे चाचा की डायलिसिस हो रही थी, मेरे दादा की डायलिसिस हो गई थी, वो तो 2 साल में चल बसे। ये एक अजीब तरह का फियर लोगों के दिमाग में है। सो हम मानते हैं कि क्रॉनिक किडनी डिजीज डायलिसिस सर्वाइवल्स बहुत अच्छे तो नहीं है, लेकिन हम उसको नॉर्मल इंसान से नहीं कंपेयर कर सकते। हम किससे कंपेयर करेंगे? जिसको डायलिसिस नहीं हो रहा। तो डायलिसिस कैन गिव यू लाइफ। आजकल पेशेंट्स 10-10 साल डायलिसिस पर हैं। सबकी यूनिट्स में, डायलिसिस यूनिट्स में कहीं भी देख लीजिए देश में, लोग हैं कई 7 साल से, 8 साल से, 10 साल से, 15 साल से लोग डायलिसिस पर हैं और एक रीजनेबल लाइफ जी रहे हैं। अब एक 70 साल का आदमी डायलिसिस पर है, वो वैसे भी रिटायर्ड है, लेकिन कई यंग पेशेंट्स अपना पूरा बिजनेस करते हैं डायलिसिस पर जब होते हैं। कुछ लोग अपना जॉब करते हैं और फ्रूटफुल, रीजनेबली प्रोडक्टिव लाइफ्स जीते हैं। तो कई बार हमारे पेशेंट जब 8-10 साल डायलिसिस पे हो जाते हैं, एक मेरा जैसे कि पेशेंट था जो कि आई थिंक 20 साल की उम्र से, 20 तो नहीं, 25-28 साल की उम्र से डायलिसिस पे शुरू हुआ, 15 साल डायलिसिस पे रहा, तब तक उसके बच्चे बड़े हो गए, बच्चों ने नौकरी करनी शुरू कर दी, तो ही वॉज वेरी हैप्पी। एंड हिज गुड फ्रेज वॉज, विच आई कीप कोटिंग, कि मेरी बहुत जिंदगी कवर हो गई इससे, मेरे बच्चे बड़े हो गए, मेरी लड़की अब नौकरी करती है, मेरा लड़का इंजीनियर बन गया। सो इट्स लाइक दैट, इट गिव्स यू लाइफ। We should not look at dialysis as something, let's say, moribund, but look at the positive aspects. अभी जैसे एक मोटो पिछले कुछ साल से चल रहा है, वर्ल्ड किडनी डे का ही, living with kidney disease. So now we are trying to ensure that, okay, you live with kidney disease, live happily, live well. ठीक है? So, और इवन अगर हम मोर्टेलिटी देखें, पिछले सालों से धीरे धीरे डायलिसिस की कम होती जा रही है। आज से 30 साल पहले डायलिसिस की क्वालिटी और थी, आज डायलिसिस की क्वालिटी इज मच बेटर। सो क्वालिटी ऑफ लाइफ भी उसी हिसाब से बेटर हो गई है डायलिसिस पे। दूसरा है ट्रांसप्लांट, मेन रिप्लेसमेंट थेरेपी। सो ट्रांसप्लांट एनीवे, as we say, transplant, there are no contraindications except 1 or 2, which are active cancer, active infection, things like that, or another bad disease which doesn't give you lifespan. So transplant ke baad quality of life is very good. It adds years to life. You are as close to normal as you can be. So people again can get productive lives. उसमें longevity भी बढ़ जाती है transplant के बाद. You add years to your expected life as compared to dialysis. You have a great quality of life. Again, you can go back to your job, you can travel, you can be, let's say, productive. If you are a student, go back to studies.
So again, I mean, there are people who got transplanted at 15 years of age. They have gone to school, they have graduated, they have a job now. So it applies to women. They regain their reproductive ability. They can be they can produce children. So transplant adds a lot to quality of life, and it's also economically more viable than dialysis. So ट्रांसप्लांट का एक इनिशियल जिसको अब ये एसोचैम है तो केपेक्स ज्यादा है बट ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर कम हो जाता है बाद में सो इट्स इकोनॉमिकली मोर वायबल बट हाँ उसका जो भी लॉ रेगुलेट करता है वी नीड अ रिलेटेड डोनर एंड देयर इज ऑल दिस मूवमेंट टू इंक्रीज द डिसीज डोनर प्रोग्राम सो we should look at somewhere it's like glass half full half empty. We should start looking at renal replacement therapy with some optimism, look at glass full. So 30 years ago, the same patients died. Now the same patients probably can live longer on replacement therapy. So I think this is somewhat Yes, encouraging to patients, and we definitely, should take a ma'am. positive view of dialysis You and have given a transplant. you've given a lot of hope. Now, one question we have got in a chat box also. That Mhm. is, can a person with just one kidney, because we know there are two of them in the body, but if because of some surgery or by birth someone has only one kidney, is it somehow any problem? Does it pose as a risk for that person? It's variable. So if the all depends if this existing kidney is normal or not. So let's say kidney donors. So one kidney is removed for a good purpose, and it's ensured before taking that kidney and giving it to a recipient that this kidney, the remnant kidney, is normal. So most donors do well. And if you are born with one kidney, it's possible that the other kidney is normal. In older era, when there were no routine ultrasounds, this single kidney was discovered much later in life. It's also possible if it's a congenital defect that the other kidney also is somewhat abnormal. It's there, but somewhat abnormal. So I would say anybody with one kidney should have some kind of a regular health checkup or a nephrology checkup. So one must have blood pressure checkups, one must have kidney function checkups, and a urine checkup. So if the same person, let's say, was born with one kidney by 15 years of age, starts developing subprotein in urine, it is treatable. At least we would, with treatment of blood pressure and proteinuria, we would delay his advanced kidney disease. If he had to, let's say, maintain kidney function for X years, maybe we can make it 3x, 4x. So some kind of a routine follow-up would be recommended. So it has to be taken on an individual basis. I would not give them a clean check completely. बिंदास हो जाइए, ऐसा नहीं है. But take care. And at the same time, you may stay normal until, let's say, 75 years of age or whatever. So needs to be individualized. Sure, sure. But Thank you, ma'am. I think that checkups are was required. very rightly pointed out by you. And the viewer who has asked the question is also very thankful to you. He's just mentioned that. So I'm so grateful to all of you for coming here. Now I request all of you to say a few words, give a message to our audience. So let's start with you, Dr. Rishit. Would you like to give a message to our audience as a nephrologist, as a doctor, as a friend? Yes, yes. So as this year's World Kidney Theme Day is Kidney Health for All, so kidneys are extremely important organs. They receive around 25% of the blood supply, so they should not be neglected. And there are some golden rules for having a good kidney. That is, you should control your blood pressure, you should control your diabetes, you should keep your weight under check, you should be physically active, you should avoid smoking, you should limit your alcohol, and you should regularly check up with your doctor, and you should not take any over-the-counter pills or medications. And with these few golden rules, you can keep your kidneys healthy. If you have kidney problems, don't neglect them. If they're detected early, you can diagnose them and you can prevent the progression of the disease if they are diagnosed early. And even if you
unfortunately develop bigger problems, don't worry. Kidneys, because of these good replacement therapies, you can lead a normal life. So that's my message to all. Thank you so much. Thank you so much, Dr. Rishit, for your message and for being with us. Dr. Siddharth Lakhani, would you like to share your message now? Yes, definitely. So, as probably Rishit covered a lot of things, but most important part is, as we say in probably scholastic things or in our college days also, I think Rishit and ma'am both will agree. The one who started studying early got better results and got probably a better ranked and better position. Same applies to the health these days. So you to start early, start probably healthy lifestyles at an early age. सबका एक अप्रोच है कि अरे अभी तो उम्र है 35-40 के बाद देखेंगे तभी चालू करेंगे अभी तो जीने का टाइम है तो दैट कंसेप्ट इज गॉन 40 के पहले ही सब आ रहा है अभी कंसेप्ट इज अगर आप 40 क्रॉस कर गया तो आप 60 क्रॉस करेंगे इफ यू डोंट टच 40 विदाउट डिसीज यू आर नॉट गोइंग टू सर्वाइव लॉन्गर दैट्स अ फैक्ट ऑफ टुडेज वर्ल्ड आई थिंक ऑल ऑफ अस विल एग्री इन द टुडे प्रैक्टिस so jaldi chalu kariye I think ideal age is to start between 15 and 20 where most of our kids start becoming having all bad habits right from all addictions to bad food styles so food fads early probably diagnosis and definitely preventive approach and a healthy lifestyle which we have discussed already so बीमारी होने के लिए वेट मत करिए पहले ही शुरुआत करिए एंड पहले ही अच्छे रहिए एक बार बीमारी आ गई तो आज की बीमारी ऐसी है कि ना आपको जीने देगी आप अगर महीने में लाख रुपया कमा रहे हो तो 60,000 रुपया 50,000 रुपया दवाई के पीछे खर्चा करना पड़ेगा एंड यू विल प्रॉब्ली गो वेल बिहाइंड द रेस अगर आप 40 साल का आदमी फिट है और आप हो योर थॉट प्रोसेस विल कि मैं 60 जी पाऊंगा कि नहीं जी पाऊंगा जबकि मेरा थॉट प्रोसेस रहेगा कि मैं 50 पे कौन सा घर लूं मैं आगे कहाँ जाऊं मैं आगे क्या करूं सो दैट इज द वेरिएशन व्हाट वी सी so if you are healthy at 40 if you are healthy much earlier you will have better thought process in life and you will want to progress in life otherwise it's a standstill for all our diabetic patients I think both of us and probably you also will agree कि वो आके एक ही चीज बोलते हैं सर एक 10 साल बच्चे की शादी वादी हो जाए इतना जिला दो बाद में कोई टेंशन नहीं चले भी जाए तो टेंशन नहीं व्हाई बट इफ यू कैन लिव हेल्दी अगर आप जी सकते हो शुरुआत जल्दी करो पैसा कमा के लाइफ में स्ट्रेस लेके काम करके अगर इतना ही जीना है तो फिर तो टेंशन ही नहीं फिर कमाना ही क्यों है जो चल रहा है उसी मेथड से चलते रहो सो आई थिंक ज्यादा जीना है और अच्छा जीना है यही एक टारगेट होना चाहिए हर एक का और इसके लिए एक ही गोल्डन रूल है जल्दी शुरू करो और लाइफस्टाइल जल्दी रखो और सब पैरामीटर्स को पहले ही कंट्रोल रखो किसी भी चीज को डिरेंज होने मत दो एक बार डिरेंज हो गया वंस यू आर इन अ रेड जोन इट इज वेरी डिफिकल्ट 5 किलो वजन कम करने में भी नाक में दम आ जाता है सो वो वजन बढ़ने में बहुत आसान है महीना भर बर्गर खाओ वजन बढ़ेगा पर 5 किलो नीचे लाने में इट विल टेक 6 months so I think that is how लोगों को एक अप्रोच देना चाहिए कि जल्दी शुरू करिए I think that will be my key home message to all of them Yes. Thank you so much. And I think that was a very, very actual message. Ma'am, what would you like to say to our viewers? I think both my co-panelists have already given a lot of stress on lifestyle management, although I also would never want to get fat. So anyway, so my message would be, I think people must understand kidney disease is largely preventable. And if you once get it, then you have to choose one of the replacement therapies. And so try to control the risk factors, control diabetes, control blood pressure. And as Dr. Lakhani says, if you have early chronic kidney disease, just the way with life cycle, kidney disease also has a cycle. So start treating early and you will have many more useful years with your own kidneys. So just like life, start early, start treatment, be regular, control your diabetes, control your blood pressure. The rest is all a myth. Drinking water, all this is a myth. So basically preventable. And you can live with kidney disease once you get it. Thank you so much, ma'am, Dr. Manju Agrawal, and thank you so much, all our panelists. You've really given us. This was a very interesting session, I would say, and I'm sure all our viewers have benefited from this. So I once again like to thank you on behalf of ASSOCHAM and on behalf of the chairperson of ASSOCHAM, Mr. Anil Rajput, who's not here right now. I'd like to thank the whole team of ASSOCHAM who's organized, who's taken so much pains to gather us all and organize this webinar. Thank you all once again. Namaskar. Thank you. Thank you. Namaste.